Hello everyone. Welcome back to Oliveboard Regulatory Bodies. I hope that I'm audible, and this is this is the exam analysis for NABARD Grade A 2024 Phase One. This when we are talking about, it's the first instant reaction which we are looking at. So we'll be just discussing about the instant reaction, what the topics are, and what the news is. Okay, and let me just check if I'm audible or not. Okay, I think I'm audible enough. So let me tell you the instant reaction which like I have got for NABARD Grade A Phase 1 exam. This is just an instant reaction video. We will have detailed analysis in evening. So instant reaction when I'm talking about, see, this exam was much more easier as compared to other exams. Okay, so it was very easier if you compare with our NABARD Grade A 2022 exam, NABARD Grade A 2023 exam, and this NABARD Grade A 2024 exam. Then in last 2 to 3 years, this was one of the most easiest NABARD Grade A Phase 1 examination. Let us discuss about some of the topics here which came in the exam. Direct hit conceptual questions were there. Detailed analysis with questions and answers. We'll come up with one more in which we'll discuss all detailed questions with options, with answers in quite a while. Right now, we will just have the instant reaction. That's it. GA section when I'm talking about, in GA section the questions were more on RBI circulars. Now this was very surprising in GA section. So if you distribute the overall NABARD Grade A Phase 1 examination into your uh, non-merit section and merit section, the non-merit section was completely very easy. Quant, reasoning, English, computer, decision making. These were same questions which were repeated in the previous years. Concept and directed questions were there. So easy, so simple questions were there. For example, क्यूआरई की बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन, डीआई के क्वेश्चंस थे, अप्रोक्सीमेशन के 4 क्वेश्चंस थे, मिक्सिंग नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, आपके पजल्स एंड ब्लड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन था. So it was very easy when we are talking about QRA, decision making, computer awareness. ARD की अगर मैं बात करूं, ESI की बात करूं और GA की बात करूं, लेट्स स्टार्ट विद GA. GA में जो 20 मार्क्स है, these 20 marks when I'm talking about, again the 20 marks of GA were little bit out of the norms. Questions were asked. Generally what do we prefer कि current affairs के question basically sports से आ जाए या फिर basic obituaries, books. These questions are expected in exam, but this time what we saw was corpus के related from RBI circulars. Most of the questions were asked. Now definitely Lakshmi ma'am had covered all the RBI circulars, but as a NABARD Grade A Phase 1 aspirant, students mostly don't do RBI circulars. Now, this became one of the very tricky thing for the GA section. Only 20 questions were there, but the GA section was the most toughest in the NABARD Grade A Phase 1 examination this year. तो GA section आपका सबसे टफ था. ESI की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आवास योजना हो गई, आपका बजट हो गया, एमजी नरेगा हो गया, फिर इकोनॉमिक सर्वे से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे. बजट के ऊपर तो भाई साहब बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे. सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे इवन इन एआरडी सेक्शन. सो बेस्ड ऑन दैट आल्सो एसईसीसी 2011 के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. एआरडी के तो सीधे व्हेन वी टॉक अबाउट ईएसआई एंड एआरडी, दैट इज टू इंपॉर्टेंट पिलर्स फॉर नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1. both of these sections had conceptual and concept based questions. Agri census ho gaya, agronomy, then economic survey related. Then I already had told in our marathons also कि कुछ भी हो जाए MSP जरूर पढ़ के जाना for rabi crops, for marketing season, this marketing season. So make sure that you have these MSP rates. Questions which were related to टी बोर्ड, रबर बोर्ड, मैंने जितने भी बोर्ड है उसका मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें टी बोर्ड, रबर बोर्ड, स्पाइसिस बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, एवरीथिंग हैड बीन डिस्कस्ड. So overall, if you see, if the person who went through all our 2 marathons of 9 hours each, वो डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है कि वो फेल हो सकता है. नो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट दैट पर्सन विल गेट फेल्ड. कोई चांस ही नहीं है. So this was the complete phase 1 reaction from my side. Instantly when I look at the paper, yes, it is easy. What was the most toughest part? GA section.
GA section was really tough. I personally feel that sectional cutoff भी कुछ लोगों के clear नहीं हो पाएंगे. If you ask me overall cutoff and expected cutoff, definitely we'll bring a video tomorrow. If I talk about ESI and ARD especially and merit section cutoff, I personally feel that the cutoff will be very similar to past year only. Even if GA is tough, तो out of 20 marks GA का जो cutoff है 5 to 6 marks ही रहेगा. वो कितना भी tough आने दो, ऐसा नहीं है कि GA में opportunities नहीं थे, but different types of क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम वेर आस्क्ड. जैसे कि आरबीआई सर्कुलर्स को आप नाबार्ड फेज 1 में एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट द क्वेश्चंस वेर लॉट देयर. ईएसआई वाज वेरी डायरेक्ट हिट इन द सेंस, आप अगर 40-50 स्कीम के अगर एक लिस्ट बनाते, और इफ यू हैड स्टडीड दोज ऑल दी गवर्नमेंट स्कीम्स, इफ यू हैड स्टडीड एवरीथिंग, डेफिनेटली आपके ईएसआई के भी क्वेश्चंस बहुत सारे करेक्ट हो जाते. एंड एआरडी का एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो डेफिनेटली डायरेक्ट हिट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड क्यूआरई आल्सो वाज वेरी इजी. डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर, एग्जैक्टली हाउ यू कैन लुक एट द लेवल, द डिफिकल्टी की बात कर रहा हूं मैं, इट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. सो आई डोंट थिंक एनी that much more information was there. Things were double sir. ESI 32, ARD 25 and GA 10. आपका कैसा गया सर पेपर? वो क्रॉप के प्रोडक्शन का ऑर्डर वाज काइंड ऑफ unorthodox. Yes, some of the questions were little bit unorthodox in all these three merit sections, ARD, ESI and GA. ठीक है, मेरा इस मतलब इस साल दिया मैंने, yes, but let's see. Definition of rural area, which one of these is not the target of MSY? Yes, definitely ये एक बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, बट ओवरऑल इफ यू सी 35 क्वेश्चंस इन ARD वेर अटेम्प्टेबल. इन ESI तो मैं क्या बताऊं आपको, ऑल 40 वेर अटेम्प्टेबल. इफ यू वेर गोइंग टू अटेम्प्ट, यू कुड अटेम्प्ट 40 इवन. एंड GA की बात करूं तो मैं मानता हूं गाइस, मैं सही में मानता हूं GA थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स था. यस, GA वाज टफ. ESI में टफ क्यों नहीं कह रहा हूं? देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि कह रहे हैं कि टफ है ESI. मैं क्यों नहीं कह रहा हूं ESI टफ है? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, सिंपल आवास योजना, फसल बीमा योजना के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे. अब माना अगर आपने 50 गवर्नमेंट स्कीम्स की एक लिस्ट बनाई, तो आपको उस 50 गवर्नमेंट स्कीम्स को इन डेप्थ में करना चाहिए, है कि नहीं? यू हैव टू डू इट इन डेप्थ. बट ESI देयर वाज नथिंग सच एज दैट इट वाज out of the box or which was not expected in exam. Okay, everything for ESI and ARD, I will not take any of the reasons from your side. These were moderate and easy level papers and we could have scored really good marks here. Yes, every time in ESI scheme and PIB only will dominate, there is no doubt about it. If you ask many of the students have said to me that in ARD they have attempted all 40 questions. Some students are getting above 35 marks in ARD. Surprising, but such है. ठीक है, my all core students whoever are there, 20-25 students are getting above 35 marks. Leave about that. Let's talk about ESI now. In ESI many students have attempted 30 to 35 marks and they are also getting really great marks. 30 plus marks तो बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं. The problem with ESI is that it's not that the section was tough, it's that we are not well prepared for ESI. Whatever year is, whenever the exam is, we will be not ever prepared for ESI. क्यों? क्योंकि करंट अफेयर से कुछ भी पूछते हैं and we are not well prepared. That's the honest thing from my side. सर कल आपने पढ़ाया भी था गैलेक्टोपोरियोसिस. मैं मतलब सही में ऐसी डांट लगाऊंगा ना कुछ कुछ बच्चों को. आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड विद दोज स्टूडेंट्स व्हेन आई प्रेडिक्ट एवरी ईयर, आई प्रेडिक्ट 25 प्लस क्वेश्चंस इन ARD. 25 प्लस क्वेश्चंस मैं प्रेडिक्ट करता हूं इन नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एग्जामिनेशन. रियली इट्स समथिंग लाइक प्रेडिक्शन गुरु. मैंने बताया था ऑस्टियोपोरोसिस आएगा आ गया, और फिर भी एक बच्चे ने गलत कर दिया. सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू टेल यू गाइज. ठीक है, देयर आर सम ARD में बहुत सारे, जब मैं आपका ओवरऑल एनालिसिस करूंगा ना, आपको ऐसे ऐसे बताऊंगा कि ये क्वेश्चन हमने कब लिया था, ये क्वेश्चन हमने कब लिया था. आई विल टेल यू दिस. Out of 40, almost close to close, if you see, when options are same, concept is same, I think 33 to 34 questions are same.
which we have discussed in our marathon. And which marathon I'm talking about? Only 2 days marathon, 9 hours marathon. उसी में सब कुछ covered है. Okay, so this was the instant reaction from my side. Let's wait for let's wait for some time. I will make sure that we have complete analysis with us. Thank you very much and see you next time.